I'm going to revise a little what we did yesterday. Yesterday, or the previous class, we said that the coronary and the cerebral blood flow is going to be protected by all the reflexes that are going on. So what's happening next? The factors that cause a person to recover from moderate degrees of shock are all the negative feedback control mechanisms of the circulation that attempt to return cardiac output and arterial pressure back to normal. Now, I think discussed this so many times, and I'm going to do it again. I gave you a list of 8 or 9 reflexes in acute control of blood pressure, and all these or most of those are included over here. I'm not going to go into the detail. You've done the detail already. Just write down again what is happening in the first degree of shock or first stage of shock, that the negative feedback control mechanisms are all coming into play. That is the baroreceptor reflex, the CNS ischemic response, the reverse stress relaxation of the circulatory system. Fourth is formation of angiotensin by the kidneys. I'm not going into the detail because you already know. Okay? तो क्या क्या पढ़ा हमने? Baroreceptor reflex, CNS ischemic response, reverse stress relaxation, formation of angiotensin by the kidneys, formation of antidiuretic hormone by the posterior pituitary, which constricts the peripheral arteries and veins and greatly increases water retention by the kidneys. And I told you that vasopressin is the hormone which has the most marked generalized vasoconstrictive properties. Okay? And also, what does it do? It causes water retention by the kidneys. Then the compensatory mechanisms that return the blood volume back towards normal, including absorption of large quantities of fluid from the intestinal tract, absorption of fluid into the blood capillaries from the interstitial spaces, that इसको क्या कहेंगे? Capillary fluid shift mechanism. Okay? And conservation of water and salt by the kidneys, and increased thirst and increased appetite for salt, which makes the person drink water and eat salt. This is extremely important because you forget to mention thirst. As soon as there is hypovolemia, whenever the hypothalamus or the osmoreceptors are going to be stimulated, the osmoreceptors are in direct contact with the thirst center in the brain. And the thirst center and the increased appetite for salt is going to be simultaneously activated. Remember, we said that the behavioral mechanism, this is a part of the behavioral mechanism. Okay? Increased thirst and increased appetite for salt. The sympathetic reflexes provide immediate help towards bringing about recovery because they become maximally activated within 30 seconds to a minute after help. And you know this, we've also done the control mechanisms, the summary of the control mechanisms, the diagram that I showed you, which is in written. And you know that it's drawn against time. You have to learn how to draw it. And very explicitly, it's given over there that how in different time parameters, which of the reflexes, sympathetic reflexes are activated. The angiotensin and vasopressin mechanism, as well as the reverse stress relaxation that causes contraction of the blood vessels and venous reservoirs, all require 10 minutes to 1 hour to respond completely, but they aid greatly in increasing the arterial pressure or increasing circulatory filling pressure and thereby increasing the return of blood to the heart. Now, if you have your books with you, you can just open the page to that summary and you will understand this paragraph better. Angiotensin and vasopressin mechanisms, as well as the reverse stress relaxation that causes contraction of blood vessels and venous reservoirs, all require 10 minutes to 1 hour to respond completely, but they aid greatly in increasing the arterial pressure or increasing the circulatory filling pressure and thereby increasing the return of blood to the heart.
Then finally, readjustments of blood volume by absorption of fluid from the interstitial spaces, intestinal tract, as well as oral digestion and absorption of large quantities of water and salt may require 1 to 48 hours. But recovery eventually takes place provided the shock does not become severe enough to enter the progressive stage. तो ये हमने कौन सा वाला पार्ट किया, हमने ये नॉन प्रोग्रेसिव किया है जिसमें all which I mentioned previously makes the shock retainable and adjustable, and all the negative feedback mechanisms by the body operating in the body are going to stop the shock from going into the next stage, and that is the progressive stage. अच्छा, अब आ जाते हैं हम progressive shock. Now, what is the one factor that causes the shock to become from the non-progressive to progressive? ठीक है, अब ये आपने नहीं भूलना. दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. द वन फैक्टर विच मेक्स दिस ड्रामेटिक चेंज इज कार्डिक डिप्रेशन. ठीक है, अब मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि वासोमोटर फेलियर होगा, वासोमोटर फेलियर होगा और उसकी वजह से ये होगा. नहीं, it is cardiac depression. When the arterial pressure falls low enough, coronary blood flow decreases below that required for adequate nutrition of the myocardium. ठीक है, so cardiac depression किस वजह से होगा जी? Coronary blood flow जो है ना, that is going to be compromised, and when that is compromised, adequate nutrition of the myocardium will not take place, and obviously cardiac depression will ensue. This weakens the heart muscle and thereby decreases the cardiac output even more. Thus, a positive feedback cycle has developed, whereby the shock becomes more and more severe. Thus, one of the important features of progressive shock, whether it is hemorrhagic in origin or caused in another way, is eventual progressive deterioration of the heart. अब यही बात है ना कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको चाहे हेमोरेजिक शॉक आए या सेप्टिक शॉक आए, एनाफाइलैक्टिक आए, किसी भी ओरिजिन का शॉक आए, जो प्रोग्रेसिव शॉक की रीजन है वो डिटीरियोरेशन ऑफ द हार्ट ही होगा. या जो 3 स्टेजेस हैं, इरिवर्सिबल, जो नॉन प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, और थर्ड स्टेज इरिवर्सिबल है, वो सारे हर टाइप ऑफ शॉक में एक ही तरह के. ऑल राइट, तो नेक्स्ट, अब प्रोग्रेसिव शॉक में पहले होगा कार्डिक डिप्रेशन और फिर वासोमोटर फेलियर. There comes a point when the diminished flow to the brain's vasomotor center depresses the center so much that it too becomes progressively less active and finally totally inactive. ठीक है जी, तो पहली चीज थी कार्डिक डिप्रेशन, बल्कि पहली चीज थी decrease in coronary blood flow that is going to compromise the myocardial nutrition, that is going to cause cardiac depression, and the cardiac depression is going to cause diminished blood flow to the brain's vasomotor center, and that is going to cause vasomotor failure. During the first 4 to 8 minutes, the most intense of all sympathetic discharges, but by the end of 10 to 15 minutes, the vasomotor center becomes so depressed that no further evidence of sympathetic discharge can be demonstrated. अब इसमें ये है कि जो CNS ischemic response है वो भी फेल हो जाती है. ठीक है, fortunately vasomotor center usually does not fail in the early stages of shock, even if the arterial pressure remains above if the arterial pressure remains above 30. अच्छा, एक तो ये हो गया. अब नेक्स्ट है जी कि there is blockage of very small vessels, sludged blood. Why and what is this going to do? So 1, we said cardiac depression. 2, we said vasomotor failure. 3, we are saying sludged blood. Blockage occurs in many of the very small blood vessels in the circulatory system, and this also causes the shock to progress. The initiating cause of this blockage is sluggish blood flow in the micro vessels.
Because tissue metabolism continues despite the low flow, large amounts of acid. Obviously, if tissue metabolism is going on, but the flow is less, so what is happening? Oxygen and nutrition is being used up, and carbon dioxide and all the acids are going to be produced. But because of diminished flow, that is not going to be taken away by the flowing blood. तो क्या होगा? Accumulation हो जाएगी ना, ठीक है? Carbonic acid and lactic acid continue to empty into the local blood vessels and greatly increase the local acidity of the blood. Why local? Because the flow is compromised. This acid plus other deterioration products from the ischemic tissues causes local blood agglutination, resulting in minute blood clots, leading to very small plugs in the small vessels. ठीक है जी? तो प्लगिंग का क्या रीजन हमने देखा है? Acidity. Local hyperacidity is going to cause local blood coagulation. Even if the vessels do not become plugged, an increased tendency of the blood cells to stick to one another makes it more difficult for blood to flow through the microvasculature, giving rise to term slash blood. तो slash blood हमने देखा है क्या हुआ है? सबसे पहले फ्लो जब कॉम्प्रोमाइज हुई है तो क्या हुआ है? लोकल एसिडिटी बढ़ गई है. लोकल एसिडिटी के बढ़ने से क्या हुआ है कि clotting in the minute vessels हो गई है, और other than that there is increased tendency for the bloods to stick to each other, and that itself is going to cause increase in clotting, and that will lead to flushed blood. Then we come to increased capillary permeability. After many hours of capillary hypoxia and lack of other nutrients, the permeability of the capillaries gradually increases. क्यों होगी भला? आपको पता है वेजोडाइलेशन भी हो जाएगी हाइपोक्सिया से, और क्या होगा उसकी वजह से? जब वेजोडाइलेशन होगी तो परमेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी. लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लूइड विल बिगिन टू ट्रांसफर इनटू द टिश्यू. अब एक्चुअली होना तो ये उल्टा चाहिए था कि बिकॉज वी हैव हाइपोवोलेमिया एंड बिकॉज वी हैव डिमिनिश्ड फ्लो, तो फ्लूइड शुड गो मूव फ्रॉम द इंटरस्टिशियम इनटू द इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट. लेकिन जब प्रोग्रेसिव शॉक होगा तो उसमें उल्टा सिस्टम हो जाएगा कि मोर फ्लूइड इज नाउ कमिंग इनटू द टिश्यू. दिस डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम इवन मोर विद द रिजल्टेंट फर्दर डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट मेक्स द शॉक इवन मोर सिवियर. Capillary hypoxia does not cause increased capillary permeability until the latest stages of prolonged shock. Another factor which is as important as the decrease in coronary flow and cardiac depression is the release of toxins by the ischemic tissues. Okay? Shock causes tissues to release toxic substances such as histamine, serotonin, and tissue enzymes that cause further deterioration of the circulatory system, particularly that of the heart. Quantitative studies have proved the significance of at least one toxin called endotoxin. Now, what is that? See, cardiac depression caused by endotoxin. So, cardiac depression दो बहुत powerful वजूहात की वजह से हो रहा है. One, compromised coronary flow, and by the endotoxin. Endotoxin is released from the bodies of dead gram-negative bacteria in the intestines. अब वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी तो बेचारे मर जाएंगे ना, बिकॉज वहां फ्लो ही नहीं जा रही. Diminished blood flow to the intestines often causes enhanced formation and absorption of this toxic substance. The circulating toxin then causes increased cellular metabolism despite inadequate nutrition, and this has a specific effect on the heart muscle causing cardiac depression. तो कार्डिक डिप्रेशन की कौन सी दो वजूहात आपने जरूरी याद रखनी है, क्योंकि कार्डिक डिप्रेशन इज द foremost factor which causes progressive shock. One is compromisation of the coronary vessel, and second is endotoxin released by the dead gram-negative bacteria. Then generalized cellular deterioration, active transport of sodium and potassium. अब ये सारा वही है जो किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है. अगर आप उसके रिवर्स में चलें तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा.
कि सोडियम क्लोराइड जब भी एक्यूमुलेट हो जाएगा सेल में तो क्या होगा, सेल स्वेलिंग होगी और अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी डिप्रेस हो जाएगी तो एटीपी नहीं प्रोड्यूस होगी। लाइसोसोम्स अगर रिलीज कर देंगे अपने हाइड्रोलेजेस तो क्या होगा, इंट्रासेल्युलर सेल इंडक्टिंग हो जाएगी। देन cellular metabolism of nutrients such as glucose eventually become greatly depressed in the last. हेलो मैम, कैसे हैं आप? Cellular metabolism of nutrients such as glucose eventually becomes greatly depressed in the last stages of shock. All those who are listening and all those who are in this lecture, kindly have the decency of not speaking when I am, because in any case your mics will be muted centrally. If they are not, have the decency of not using them. Cellular metabolism of nutrients such as glucose eventually becomes greatly depressed in the last stages of shock. The actions of some hormones are depressed as well, including almost 100% depression of the action of insulin. All these effects contribute to further deterioration of many organs of the body, especially the liver, the lungs and the heart. तो यही तो हमें चाहिए किसी भी बॉडी को फंक्शनल रखने के लिए। अगर लिवर सही नहीं काम कर रहा, लंग्स नहीं कर रहे, लंग्स में क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। तो मजीद प्रॉब्लम क्या कि ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, ब्लड जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेशन हो रही है वो क्या होगा, लंग्स के कॉम्प्रोमाइज होने से वो भी हो रहे हैं। हार्ट they will further depressing its action. Then tissue necrosis is going to occur in severe shock. Patchy areas of necrosis will occur because patchy blood flows in different organs. Necrosis in the center of the liver lobule will take place. Similar punctate lesions will occur in the heart muscle. So heart as a whole is also compromised, and on top of that, there is going to be tissue necrosis in the heart. Then you must have heard that whenever there is progressive shock, तो कहते हैं कि kidney shutdown है। तो वो किस लिए होता है? Deteriorative lesions in the kidney, especially in the epithelium of the kidney, tubules leading to kidney failure and also uremic death several days later if this is not going to be tackled. Deterioration of the lungs often leads to respiratory distress and death will occur due to the shock lung syndrome. Acidosis हो जाएगा shock में. Why? You must understand why, क्योंकि इतना lactic acid accumulate हो रहा है. ठीक है? This results from poor delivery of oxygen to the tissues, which greatly diminishes oxidative metabolism of foodstuffs. When this occurs, the cells obtain most of their energy by the anaerobic process of the glycolysis, which produces excess of lactic acid as a result. So, poor blood flow to the tissues prevents normal removal of carbon dioxide. The carbon dioxide reacts locally in the cells with water to form high concentrations of intracellular carbonic acid, which in turn reacts with various tissue chemicals to form still other intracellular acidic substances. So, because of the poor blood flow, we have to deal with such a great degree of acidity. अच्छा, अब आपको पता है कि जो सबसे पहले नॉन प्रोग्रेसिव शॉक था उसमें क्या था, which was the most dominant thing? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि बॉडी इज ट्राइंग टू ऑटो करेक्ट. अब प्रोग्रेसिव शॉक में मतलब क्या हुआ है कि देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक डिटेरियोरेशन ऑफ टिश्यूज इन शॉक and now a vicious cycle of progressive shock is going to ensue. All the factors just discussed that can lead to further progression of shock are types of positive feedback mechanisms. Each increases the degree of shock and further will add to one more factor added to the positive feedback cycle. Okay? Whether a vicious circle develops depends on the intensity of the positive feedback cycle and whether or not the treatment that you are giving in progressive shock is working or not, and
how much the negative feedback responses are powerful enough in a human body which can combat. अब जो negative feedback mechanisms है ना बेटा, वो खत्म नहीं हो जाएंगी, वो अपना काम एक तरफ कर रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी में हर वक्त दोनों चीजें चल रही होती हैं और क्या चीज डोमिनेट करेगी वही होता है कि कौन सी चीज ज्यादा पावरफुल है। अगर प्रोग्रेसिव शॉक में अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हो और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव प्रोग्रेसिव शॉक में चल पड़ा है लेकिन ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव, तो क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक और विशियस साइकिल आहिस्ता आहिस्ता डाई डाउन करते जाएगा और जो नेगेटिव फीडबैक रिस्पॉन्सेज है वो दोबारा से इन पावर आ जाए। तो आपका दिया हुआ ट्रीटमेंट प्लस द नेगेटिव फीडबैक mechanism both are going to act to bring the person back to life. In mild degrees of shock, the negative feedback mechanisms of the circulation, the sympathetic reflexes, reverse stress relaxation, absorption of fluid into blood from the interstitial spaces, and others can easily overcome the positive feedback influences, therefore cause recovery. But in the severe degrees of shock, the deteriorative feedback mechanisms become more and more powerful, leading to such rapid deterioration of the circulatory system that all normal negative feedback systems of the circulatory control acting together cannot return the cardiac output. Okay? So, what is the final outcome? The final outcome is how much the negative responses and how much the treatment that you are giving can overcome the positive feedback or the vicious cycle that had been set. अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि irreversible shock में कि कोई भी थेरेपी आप देंगे is incapable of saving a person's life. Actually, this is a misnomer क्योंकि जो इंसान शॉक में पड़ा होता है उसके माथे पे तो लिखा नहीं आ जाता ना कि जी अभी इस वक्त मैं नॉन प्रोग्रेसिव शॉक में हूँ और फिर माथे पे लिखा आ जाएगा कि अब जी प्रोग्रेसिव शॉक में चला गया हूँ और अब माथे पे लिखा आ जाएगा कि जी आप सारी ट्रीटमेंट बंद कर दें, मैं इरिवर्सिबल शॉक में चला गया हूँ। ठीक है ना, ये तो वो टर्म्स हैं जो हमने, अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है आप अभी तक ट्रीटमेंट दे रहे हो तो फिर आप कहोगे कि जी यकीनन ये प्रोग्रेसिव से इरिवर्सिबल में चला गया होगा, इसीलिए जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे थे वो इनफेक्टिव होगी। तो आपने क्या करना, आपने बेटा उसकी डेथ से पहले तक उसको हर किस्म की ट्रीटमेंट देते जाना है, बिकॉज यू डोंट नो कि वो कौन सी स्टेज में, तो प्रोग्रेसिव में खड़ा है, उस पॉइंट पे खड़ा है कि वो रिवर्स हो सकता है या उस पॉइंट पे खड़ा है कि वो रिवर्स नहीं होगा, आपने ट्रीटमेंट उसको देते ही रहना। ठीक है, so after shock has progressed to a certain stage, transfusion or any other type of therapy becomes incapable of saving the person's life. The person is then said to be in the irreversible stage of shock. Ironically, even in this irreversible stage, therapy can on rare occasions return the arterial pressure, even the cardiac output to normal or near normal for short periods. But the circulatory system nevertheless continues to deteriorate and death ensues in another few minutes to few hours. अब इसी को इंडोर्स करने के लिए आई विल टेल यू अ स्मॉल story. I was working in the pediatric department in neonatology, and my posting over there was for 6 months. So we got to see a lot of neonates, and neonates की डेथ बहुत तेजी से हो जाती है। आप 1 मिनट आप उनको देख रहे हो, उनके अपने वाइटल्स भी हैं बिल्कुल ठीक है, और थोड़ी देर बाद आपको देखते हो तो वो respiration had stopped and the baby is blue. So we got this little child, a neonate, and she was having massive infections, and we had been treating her for about 10 days, and we were giving her incubator में हमने उसको डाला हुआ था और उसको multiple antibiotics दे रहे थे और वो ठीक नहीं हो रही, और obviously all the treatment that we were giving her was failing, and she was उसका ब्लड कल्चर में भी उसके बैक्टीरिया आ गया और ब्लड कल्चर भी पॉजिटिव आ गया, एंड वी वर श्योर दैट शी इज गोइंग टू डाई। और इंक्यूबेटर में वो पड़ी हुई थी, थोड़ी देर बाद उसको ना DIC स्टार्ट हो। अब आपको पता है जब डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाती है तो एक तरफ कोएगुलेशन हो रही होती और एक तरफ ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो रही होती, तो उस बच्ची की नाक से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, उसकी कंजक्टिवा से ब्लीड करना शुरू हो गया,
एनएस से भी वो ब्लीड करने लगी, तो हमने कहा फॉर श्योर बस ये थोड़ी देर है, इसकी सांसें चल रही है, अब ये मर जाए। अभी एंटीबायोटिक वगैरह उसको सारा कुछ जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जा रही थी। इंक्यूबेटर्स हमारे पास लिमिटेड होते थे, तो इंक्यूबेट अभी उसी वक्त एक और बच्चा, न्यू बॉर्न बच्चा आ गया, उसको हमने इंक्यूबेटर में डालना था। तो हमने सोचा कि अब ये तो डीआईसी इसमें स्टार्ट हो गई है, तो ये तो अभी मारी जाएगी। तो इंक्यूबेटर के नीचे ना जगह होती है, सर्दियों का मौसम था वो, इंक्यूबेटर के नीचे जगह होती है, एक स्लैब सा होता है, वहां पे उसको हमने इंक्यूबेटर से निकाल के उसको वहां शिफ्ट कर दिया कि अब उसको इसका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कंबल शंबल डाल दिया उसके ऊपर, मेडिसिन उसको चल रही थी, ड्रिप्स जा रही थी, एंटीबायोटिक जा रहे थे कि बस हमने कहा तो ये मरने ही वाली है। और वो दूसरे न्यू बेबी को हमने इंक्यूबेटर साफ करके उसको वहां डाला। वुड यू बिलीव दैट आफ्टर सम टाइम उसकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, और वो बच्ची जो इंक्यूबेटर से जिसको निकाल के हमने नीचे डाल दिया था कि ये बस अब ये मरने ही वाली है, that child survived and we discharged. So never ever ever say to the patient's attendants कि ये आपका पेशेंट बनने वाला है, क्योंकि आपको नहीं पता। और हमेशा 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 जब तक उसकी अपनी सांस नहीं बंद हो जाएगी या उसका अपना हार्ट स्टॉप नहीं हो जाएगा, आपने उसको मेडिसिन देते ही जाना। और दिस वाज एन आई ओपनर फॉर अस एट दैट टाइम, कि जिसको हम समझ रहे थे कि बस ये अब ये खत्म ही होने वाली है, उसको हमने इंक्यूबेटर से निकाल के टेम्परेचर कंट्रोल भी किया, उसको नीचे डाल दिया बेचारी, एंड शी सर्वाइव्ड। सो यू डोंट नो कि इरिवर्सिबल शॉक कब होगा, आपने उसको रिवर्सिबल की तरह ही ट्रीट करना है, एंड जस्ट प्रे दैट यू कैन सेव द पेशेंट। अच्छा जी, क्या होगा कि इरिवर्सिबल शॉक में उसमें अब जिसका हमने रिवर्सिबल में देखा था कि हमारे पास कार्डियोजेनिक कार्डियक डिप्रेशन थी और वासोमोटर फेलियर था। इसमें क्या होगा कि हाई एनर्जी फॉस्फेट रिजर्व्स आर गोइंग टू बी डिप्लीटेड, all the creatine phosphate has been degraded and almost all the adenosine triphosphate is downgraded to diadenosine phosphate and then adenosine। और आपको पता है कि एडिनोसिन जब बन जाती है तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सेल से बाहर निकल जाती है। तो अगर आप दे भी दें एनर्जी उसको, तो एडिनोसिन ही नहीं होगी तो फॉस्फेट किसके साथ लगेगी जा, ठीक है। इसीलिए जब भी एटीपी से एडीपी बनता है, वो फौरन के फौरन दोबारा एटीपी बन जाता है। हालांकि इसलिए कि वो एएमपी भी नहीं बनना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि एएमपी बन के नेक्स्ट स्टेज तो एडिनोसिन है, और एडिनोसिन जैसे ही बनेगी वो सेल से बाहर निकल जाएगी, और एडिनोसिन हम नहीं दोबारा मैन्युफैक्चर कर सकते इस स्टेज। Much of the adenosine diffuses out of the cells into the circulating blood and is converted into uric acid, a substance Much of this adenosine diffuses out of the cells into the circulating blood and is converted into uric acid, a substance that cannot re-enter the cells to reconstitute the ATP system. Now, adenosine can be synthesized only at a rate of 2% of the normal cellular amount an hour, और वो भी जब तब नॉर्मल बॉडी काम कर रही है। तो अभी तो बॉडी ही नॉर्मल काम कर रही है, तो जब हाई एनर्जी फॉस्फेट स्टोर्स डिप्लीट हो जाएंगे तो एटीपी ने कहां से आना, ठीक है। Thus, one of the most devastating end results of deterioration shock is this cellular depletion of these high energy phosphate compounds. अच्छा, अब ये उसने डिफरेंट दिए हैं रीजंस, और आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि आपको सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा कि जी हाइपोवोलेमिक शॉक की स्टेजेस बताएं, आपको ये सिनेरियो आएगा, ठीक है। और उस सिनेरियो में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी एक सिनेरियो है, ऑफन cause of severely reduced plasma volume, distension of the intestine in intestinal obstruction partly blocks venous blood flow in the intestine walls, which increases the intestinal capillary pressure. This in turn causes fluid to leak from the capillaries into the intestinal walls,
and also into the intestinal lumen. Hypovolemia हो जाएगा, ठीक है? Because the lost fluid has a high protein content, the result is reduced total blood plasma protein as well as reduced plasma volume. So remember that one of the scenarios that you can get in a hypovolemic shock is intestinal obstruction. Then next is severe burns. अब burns में क्यों डेथ हो जाती है? burns में सबसे बड़ी वजह उसकी एक तो इंफेक्शन है, एरिया बॉडी का जो है ना वो हो गया है, बर्न है या मुश्किल है इसका बचना, या 70% बर्न है या 80% बर्न है, तो सिवियर बर्न्स में क्या होता है? denuding conditions of the skin, so much plasma is lost. लेंगे उसको, वैसे आप दे रहे हैं वॉल्यूम, लेकिन आपने जो एक प्रोटेक्टिव लेयर थी विच इज प्रिवेंटिंग द इवेपोरेशन ऑफ फ्लूइड, वो तो लूज हो गई ना, तो फिर आप क्या करोगे? थर्ड इज एक्सेसिव स्वेटिंग में भी हो सकता है, सिवियर डायरिया वॉमिटिंग में भी हो सकता है, नेफ्रोटिक डिजीज में भी हो सकता है, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ प्रोटीन एंड फ्लूइड इज गोइंग टू बी लॉस्ट इन द cause increased loss of salt and water, and so is going to cause hypovolemic shock. तो ये सारे 7 कंडीशंस आपको बताई हैं, इन 7 में से कोई किसी एक पे भी सिनेरियो बन सकता है। ट्रॉमा से भी मैंने आपको बताया था हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, क्यों? The shock results simply from hemorrhage caused by trauma, but can also occur even without hemorrhage, because extensive contusion of the body can damage the capillaries so much that there is excessive loss of plasma to the tissue. तो ट्रॉमा से हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो जाता है, ट्रॉमा से न्यूरोजेनिक शॉक भी हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इफ यू कैन ओपन द पेज वेयर आई टोल्ड यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक्स, तो हमने पहले पढ़ा था हाइपोवोलेमिक शॉक, सेकंड था कार्डियोजेनिक शॉक, और थर्ड आपको न्यूरोजेनिक शॉक बताया था, जिसमें ना हुआ उसमें तो वॉल्यूम ही कम है। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं जिसमें हमारे पास dilation of veins is called neurogenic shock. The mean systemic filling pressure, which reduces venous return to the heart. Diminished venous return caused by vascular dilation is called venous pooling. Causes क्या हो सकते हैं न्यूरोजेनिक शॉक के? Deep general anesthesia often depresses the vasomotor center enough to cause vasomotor paralysis with resulting neurogenic shock. अब आपको पता है कि जब भी कोई पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में जाने लगता है या उससे उसके ऑपरेशन से पहले बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो फिल कराते हैं, और वो फॉर्म्स क्यों होते हैं? वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप ऑर्डिनरी जनरल एनेस्थीसिया जो सब पेशेंट्स को देते हो वो दे रहे हो उसको, लेकिन वी डोंट नो व्हाई एंड हाउ इवन दैट अमाउंट ऑफ एनेस्थीसिया कैन कॉज वाजोमोटर फेलियर इन सम पेशेंट्स, ठीक है? तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो व्हेनेवर यू आर गिविंग एनेस्थीसिया टू अ पेशेंट, ही कैन डाई, ठीक है? Then spinal anesthesia, especially when this extends all the way up to the spinal cord, blocks the sympathetic nervous outflow from the nervous system and can be a potent cause of neurogenic shock. ठीक है? क्यों करेगा स्पाइनल एनेस्थीसिया? क्योंकि स्पाइनल एनेस्थीसिया देते तो स्पाइन में हो। अब वो brain damage is often a cause of paralysis, brain concussion or confusion of the basal regions of the brain causes profound neurogenic shock. इसीलिए कहते हैं ना बेटा कि बच्चों के ना सर पे या सर के पीछे नहीं मारते कभी, क्योंकि उससे ब्रेन डैमेज हो सकता है या ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, और आपको पता है विजुअल कॉर्टेक्स होता है पीछे ऑक्सीपिटल एरिया में, उसको भी डैमेज हो सकता है। तो डोंट हिट एनीबडी ऑन द फेस और ऑन द हेड, व्हिच कैन बी फेटल।
Also, even though brain ischemia in the blood and muscles in the pericapillary tissues to release histamine and histamine-like substances. Histamine क्या करेगा? Increase in vascular capacity causes venous dilation of arterioles causing reduced arterial pressure, and thirdly, greatly increased capillary permeability with the rapid loss of fluid and protein. तो अब उससे क्या होगा? मैम कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। Greatly increased capillary permeability with rapid loss of fluid and protein into the tissue spaces. Net effect is great reduction in venous return and sometimes such serious shock that the person dies within minutes. This can occur because there is one increase हो student called जाएगी। Javed and Rabia, please आप अपना